Welcome back to Veda's Wisdom. Now today we are going to tell you a story of Piku Bird. So shall we start, children? Okay, so let's start. Piku is a small bird. She lives in a nest with her mother. One day her mother flies away to look for food. Piku does not know where her mother is, and Piku flies down from her nest and she tries to find her mother here and there, here and there. Then she sees a cat and asks a cat, "Are you my mother?" Then cat says, "Meow, meow." No. I am not your mother. I am a cat. C-A-T, cat. C is for cat. Cat. Then she walks ahead in search of her mother and she meets a dog and asks a dog, "Are you my mother?" Then dog says, "Woof, woof, woof, woof." No. I am not your mother. I am a dog. D-O-G, dog. D is for dog. Then, yes, and then again, Piku walks ahead in search of her mother and she meets a hen and asks a hen, "Are you my mother?" Then hen says, "Cluck, cluck, cluck, cluck." No. I am not your mother. I am a hen. H-E-N, hen. H is for hen. Cluck, 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 cluck. Then Piku again walks ahead in search of her mother and then she meets a rabbit and asks a rabbit, "Are you my mother?" Then rabbit says, No. I am not your mother. I am a rabbit. R-A-B-B-I-T, rabbit. R is for rabbit. Yes. And then soon a tiger comes along and Piku asks him, "Are you my mother?" Then tiger says, "Roar, I am not your mother. I am Tippy the tiger." And Piku again walks ahead and she flies back to her nest. She is very sad. "Where is my mother? Where is my mother? Where is my mother?" And what happened, you know? Soon her mother comes back to the nest. And Piku says to her mother, "Oh dear mother, I was looking for you here and there." Then her mother replies, "Oh my dear daughter, I had gone bring food for you." Then Piku says, "Oh dear mother, please don't leave me alone again." Then her mother replies, "Okay my dear baby, I'll never leave you alone again." And they live happily with each other ever after. Okay, so moral of the story is happiness is key to success. Okay, so did you get it, children, about the story? Practice it. Okay children, अभी हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे यही स्टोरी। yes. लाइक करना, शेयर करना, पहले हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे उन्हें ये स्टोरी। ओके, सो पिकू नाम की एक छोटी सी बर्ड थी। वो नेस्ट में रहती थी और उसकी मॉम के साथ रहती थी। एक दिन उसकी मॉम खाना ढूंढने के लिए गई बाहर। पिकू को पता ही नहीं था कि कहाँ उसकी मम्मा गई है। देन वो ढूंढने लगी और वो ढूंढते ढूंढते नेस्ट से नीचे उतरी और उतर के वो यहाँ वहाँ अपनी मम्मा को ढूंढने लगी। देन उसे कौन मिला आपको पता है? उसने देखी एक कैट और उसने कैट को पूछा, "आर यू माई मदर?" तुम मेरी माँ हो? तो कैट ने बोला, "म्याऊ म्याऊ
नो 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 नो, आई एम नॉट योर मदर, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तो एक कैट हूँ। देन पिकू वापस अपनी मम्मा को ढूंढने निकल पड़ी। एंड उसे कौन दिखा पता है आपको? उसे एक डॉग दिखा। तो उसे लगा शायद ये मेरी मम्मा होगी, तो उसने पूछा आर यू माई मदर? देन डॉग ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। ओके, एंड वो वुफ वुफ करने लगा और चला गया। पिकू भी अपनी मम्मा को ढूंढते ढूंढते आगे निकल गई। और उसे कौन दिखा आपको पता है? हैन दिखी। एंड उसने हैन से पूछा क्या तुम मेरी मम्मा हो? आर यू माई मदर? देन हैन ने कहा नो 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 नो, आई एम नॉट योर मदर, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। क्लक क्लक क्लक। एंड हैन भी चली गई और पिकू भी अपनी मम्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। फिर उसे कौन दिखा पता है आपको? रैबिट। कौन दिखा है? रैबिट। और फिर रैबिट से भी पिकू ने पूछा आर यू माई मदर? तो रैबिट ने क्या कहा? नो 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 नो, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। और फिर रैबिट भी चला गया और सामने कौन आया? टाइगर आया। और पिकू ने टाइगर से भी पूछा कि आप मेरी मम्मा हो? तो टाइगर ने कहा नो, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, मैं तो एक टिपी नाम का टाइगर हूँ। फिर पिकू सैड होके अपने घर वापस चली गई और नेस्ट में जाके बैठी और ढूंढने और ऐसे थिंक करने लगी कि कहाँ गई मेरी मम्मा, कहाँ गई होगी। तो जल्द ही उसकी मम्मा खाना लेके आ गई नेस्ट में। देन पिकू ने बोला अरे मम्मा, हाँ फिर खाना दिया है उसे। हाँ, फिर मम्मा से पूछा कि कहाँ गई थी मम्मा, मैंने कितना ढूंढा आपको। तो फिर मम्मा ने कहा अरे पिकू, मैं तो तुम्हारे लिए खाना लाने गई थी। तो फिर पिकू ने कहा कि मम्मा मुझे वापस कभी भी आप अकेला छोड़ के मत जाइए, है कि नहीं। तो फिर मम्मा ने कहा हाँ पिकू ज़रूर, मैं अभी तुम्हें अकेला छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, जहाँ भी जाऊंगी तुम्हें साथ लेके जाऊंगी। और फिर उस दिन से आज तक वो बहुत ही हैप्पीली एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, है कि नहीं। तो मोरल क्या है इस स्टोरी का कि हैप्पीनेस, खुश रहना एक चाबी है हमारी तरक्की की, है कि नहीं। हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। तो फिर हमें भी हमारे मम्मा के साथ, पापा के साथ, फैमिली के साथ खुश रहना चाहिए, तभी हम लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, है कि नहीं। तो आपको पसंद आई ये स्टोरी? तो आप प्रैक्टिस कीजिए और अपनी मम्मी और पापा को ज़रूर बताइएगा ये स्टोरी। ओके, तो अभी हम एक चिड़िया का गाना भी गाएंगे। चलो लाइक करो वीडियो और चिड़िया रानी बड़ी सयानी, नित्य सवेरे हमें जगाती, पेड़ों के डाल पे इनका बसेरा, सांझ होते ही ये सो जाती। चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी। चिड़िया रानी बड़ी सयानी, चुभती दाना पीती पानी, ची ची करके दाना खाती, फुर फुर करके ये उड़ जाती। चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी। Do you like this video? please do like, share and subscribe this video। Bye bye everyone. मेरा वीडियो लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय। Bye bye. नेक्स्ट सेशन में वापस मिलेंगे। Promise. हमने